Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद पुनीत। हाँ, धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Domestic share indices decline around 0.8%. Sensex closes near 57,100 points. Nifty settles below 17,100. Rupee appreciates by 6 paise against the US dollar and Brent crude oil prices rise to $109.50 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक में 0.8% की गिरावट, सेंसेक्स 57,100 और निफ्टी 17,100 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की मजबूती और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $109.50 प्रति बैरल तक पहुंचे। घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती बढ़त के बावजूद अंतिम कारोबारी सत्र में बिकवाली का दबाव रहा और गिरावट दर्ज हुई। हालांकि वैश्विक बाजारों में मजबूती का रुझान रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.8% तक की गिरावट रही। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.8% के नुकसान से 460 अंक लुढ़ककर 57,061 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.8% की ही गिरावट से 143 अंक गिरकर 17,103 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.8% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today fell around 0.8%, pairing early gains amid last hour selling. Domestic stock indices declined even as cues from the global share markets are positive. Sensex at the BSE closed below 57,100 points, while Nifty at the NSE was settled near 17,100 level. Sensex tumbled 460 points or 0.8% to close at 57,061, while Nifty plunged 143 points or 0.83% to finish at 17,103. In the broader market at the BSE, the mid-cap index lost 0.81%, while the small-cap index ended 0.58% down. In the Sensex pack, 7 companies logged gains while 23 declined. Kotak Mahindra Bank was the top gainer as it added 1.3%, followed by HDFC Bank, which rose by 1%. Sun Pharma gained 0.9%. Tata Steel climbed 0.8% and Dr. Reddy's Laboratories surged 0.4%. On the other hand, Axis Bank tumbled 6.6%, NTPC plunged 3.8% and Power Grid declined 3.4%. Wipro fell by 2.6% and Titan slipped 2.2%. In sectoral indices at the BSE, all 19 indices witnessed losses. Oil and gas index lost the most as it slid by 2.6%, followed by the energy index, which plunged 2.5%. Power tumbled 1.9% and utilities declined 1.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,185 companies gained while 2,195 fell. Shares of 128 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की मजबूती से 76.43 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स 0.6% की गिरावट से 103 के स्तर पर रहा। पुनीत, बाजार की आज की दशा पर किस तरह से आंकेंगे आप? बाजार कितना दबाव में बना हुआ है और ये दबाव कब तक जारी रहने की उम्मीद है, या बाजार में सुस्ती कुछ मौसम की मार से भी कदम ताल कर रही है? हाँ, बिल्कुल। तो मौसम तो दिल्ली में तो काफी गर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बाजार की सुस्ती के कारण है वो कहीं ज्यादा है। पहली बात यह है कि आज बाजार इनफैक्ट मॉर्निंग में तो अच्छा खुला था। ऊपर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर गेन्स थे जब बाजार की ट्रेडिंग शुरू हुई और काफी पूरे दिन बाजार में एक पॉजिटिव माहौल सा था। लेकिन अचानक पिछले जो सत्र था, जो लास्ट के 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग होती है, लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग होती है, उसमें हमने देखा कि काफी भारी बिकवाली आई और बाजार में एकदम शार्प फॉल आया। तो क्लियरली मैं ये कहूंगा कि बाजार में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए आप, या कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं पर्टिकुलरली, वो अभी सेलिंग उनकी बरकरार है, चालू है। और मुझे लगता है कि ये सेलिंग अभी थोड़े दिन और रहेगी। जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी बाजार में थोड़ी ट्रैक्शन होती है तो सेलिंग करते हैं। और ये हमने कई बार देखा है कि लास्ट
सेशन में वो काफी सेलिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी और कंसोलिडेशन बाजार में बाकी है, मे बी फॉर कपल ऑफ मंथ्स, जिस दौरान हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व जो यूएसए का है, वहां इंटरेस्ट रेट्स में जो बदलाव कर रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और शायद आरबीआई भी कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की कुछ कदम उठाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बाजारों के लिए जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो फिलहाल ज्यादा हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स कम हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बाजारों में आने वाले 2-3 महीने डेफिनेटली कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए और बाजारों में सेलिंग प्रेशर समय समय पर आ सकता है। Puneet, according to the provisional data, you're right, the FII, FPIs are the net sellers in today's trade to the tune of 3,648 crore rupees. And on the flip side, DIIs were the net buyers to the tune of 3,490 crore rupees. You mentioned about the LIC IPO. How much of that is going to suck the liquidity from the market in the 1 week that the red herring prospectus post the IPO will remain active? So, Arjun, typically when a large IPO like LIC hits the market, it does tend to suck liquidity because let's say this IPO is about 40,000 odd crores, and it will draw a very large oversubscription, it appears, because retail investors as well as HNIs and institutional investors want to participate in it. So my own sense is that in the run-up to the IPO, we will see money being diverted or being held back by investors from other avenues. So definitely it will be some drag on the broader market. However, I think the reasons for this, the weakness in the market, broader market, is much more than just the LIC IPO. Like we talked about it earlier, whether it is interest rates or inflation or the US Fed action. US Fed is meeting next week, and we are all expecting US Fed to raise rates by at least 50 basis points, which has already led to run up in dollar index. So all these things are playing into it. One thing I must point out here is that FII selling has been huge in India. And largely because India is a liquid market. There are many markets they wanted to sell, but they couldn't sell. I mean, in China, they couldn't sell the stocks. The stocks fell so sharply. In Russia, in many other emerging markets, they could not sell their stocks. India, somehow they have been able to sell, fortunately. And that has led to record low level of FII holding in Indian companies. Last I looked, FII holding in BSE 500 companies is now below 20%. This is the level which they had in 2012-13. So you can imagine that has been the scale of selling by FIIs. And I think it will continue for a while. It may not be very large going forward. I think most of the selling has been done, but they will continue to sell. So and therefore I think markets will remain under pressure for some time. पुनीत, आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया, उसमें एक आध चीजें मैं भी जरूर जिज्ञासा के तौर पे जानना चाहूंगा। आपने जिक्र किया बाजार में मुद्रास्फीति का दबाव जो है वो अभी कुछ और समय तक जारी रह सकता है, तो ऐसे समय में उद्योग जगत के लिए और एक आम उपभोक्ता के लिए, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं वो भी अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण काफी बदली हुई हैं, ऐसे दौर में उद्योग जगत के लिए कितनी चुनौतियां हैं और एक आम भुगता के लिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, दाम हैं, उसमें बहुत तेज दबाव है इन सब चीजों का, कब राहत मिलती हुई नजर आती है और फौरी तौर पर क्या हमें अभी इससे कितनी तौर पे और जूझना पड़ेगा? तो अमित, जो इन्फ्लेशन है ये एक बहुत अजीब इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से नहीं है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ दो प्रकार से है, एक तो फूड एंड फ्यूल जिसे हम कहते हैं, और वो वोलेटाइल होता है, कभी वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो उसको कभी कभी हम वो फिगर हटा देते हैं और हम कोर इन्फ्लेशन यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या जो लॉन्ग टर्म गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम देखते हैं कि वहां इन्फ्लेशन कितना है। अभी फिलहाल फूड एंड फ्यूल में भी इन्फ्लेशन ज्यादा है और जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा है। तो कोर इन्फ्लेशन का कारण है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, क्योंकि चाइना में काफी बड़े पैमाने पे लॉकडाउन चल रहा है, तो वहां पर हालांकि सामान बनने की क्षमता तो है, ऐसा नहीं है कि सामान की शॉर्टेज हो गई है, लेकिन वो सामान का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है। तो ये सप्लाई चेन इश्यूज कब खत्म होंगे? मेरा अपना अनुमान है कि 3 से 4 महीने में सप्लाई चेन इश्यूज जो है कम होने शुरू हो जाएंगे। और जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, डीजल पेट्रोल की बात है, और उससे जो इन्फ्लेशन आ रहा है, देखिए वो लिंक्ड है जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है।
रशिया ने खास तौर से जो गैस के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं यूरोप के लिए, और वो एक अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहा है एनर्जी प्राइसेस को लेकर, उसको वेपनाइज कर रहा है, यानी वो जो एनर्जी प्राइसेस है उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो इसका जो असर होगा वो बहुत मुझे लगता है लंबा होगा, अभी आसानी से ये शायद दूर नहीं जाएगा। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि उपभोक्ताओं के लिए और कंपनियों के लिए आने वाले 5 या 6 महीने काफी चैलेंजिंग है, और उन्हें ध्यान से मैं कहूंगा और कॉशियस एक अप्रोच रखनी चाहिए टुवर्ड्स ग्रोथ एंड टुवर्ड्स स्पेंडिंग। नजर डाल लेते हैं LIC IPO पर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आगामी 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयर मूल्य 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया है। निवेशक कम से कम 15 शेयर और इसके गुणक में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्गम में योग्य कर्मचारी जो खुदरा निवेश कर रहे हैं उन्हें 45 रुपए और पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट दी जाएगी। इस निर्गम के तहत सरकार LIC के 22 करोड़ 13 लाख शेयर बेचकर 3.5% की हिस्सेदारी का भी निवेश करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम सचिव तुहिंदकांत पांडे ने बताया कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। पुनीत, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि ये बहुत बड़ी मात्रा में बाजार से निवेश को कहीं न कहीं सोखेगा, तो क्या हम ये माने कि अब शेयर बाजार में इसके वजह से भी कुछ फौरी तौर पर हमको बिकवाली का दबाव देखना पड़ सकता है? और दूसरा, जो अलग परिस्थितियां हैं जिसका जिक्र भी आपने किया कि मुद्रास्फीति में भी बढ़त है, उद्योग जगत के लिए भी चुनौतियां हैं, आम उपभोक्ता के लिए भी चुनौतियां हैं, उन सारी वजहों से और साथ ही जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो चूंकि बिकवाली कर रहे हैं, तो बाजार में कहीं न कहीं हमको एक बिकवाली या एक तात्कालिक ही सही मंदी का दबाव देखने को मिल सकता है। अमित, मैं कहूंगा कि LIC का इशू और जो बाजार में फिलहाल जो एक कुछ हद तक वीकनेस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। LIC इशू से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, उसका इनडायरेक्ट या बहुत ही मार्जिनल इम्पैक्ट होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। उसका कारण यह है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं और जो उसके अंदर काफी FII के लिए 20% की साझेदारी भी सरकार ने पास कर दी है LIC के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक तो फ्रेश मनी जो LIC के इशू में आएगा वो आने वाला है। और जो LIC का इशू है वो जितने भी हम इंश्योरेंस कंपनीज की वैल्यूएशन देखें वर्ल्ड वाइड, सबसे अट्रैक्टिव इशू है और सबसे सस्ते दामों पर ये इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी और LIC बहुत रेप्यूटेड बहुत बड़ी कंपनी है, तो काफी अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को और फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये इशू काफी सक्सेसफुल भी होगा और इसके अंदर इससे कोई बाजार पर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। बाजार के जो बाकी कारक हैं प्रेशर्स के वो अलग हैं और वो अभी कुछ दिन तक शायद रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि LIC का इशू को जिस प्रकार का एक बम्पर रिस्पांस मिल सकता है या बम्पर लिस्टिंग जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था लिस्टिंग के ऊपर, शायद वो ना मिले। एक मॉडेस्ट इंक्रीज जरूर मिलेगा प्राइस को, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए LIC का इशू लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है कि फायदेमंद ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बम्पर लिस्टिंग इज यूजुअली द मोटिवेशन फॉर दोज हू सब्सक्राइब टू एन IPO, especially LIC. How do you see these tag investors right now grappling with the thought that maybe we should wait and watch for a premium to be earned on the investment? So, Arjun, I think from the discussions we have had with many investors, retail investors as well as HNIs are quite excited to invest in this because they feel, first of all, they feel it is safe. Secondly, there will be some modest gains. And I think the investors who used to invest in the so-called tech IPOs were largely speculators. They wanted to make a quick buck and sell and then make money. But I think LIC is going to attract more long-term investors, particularly retail guys, because everybody in India is very familiar with LIC and they value the company. So my own sense is that we are not looking at a bumper listing, but I think we are looking at modest gains and people who have medium to long-term objectives, I think they will be more interested in investing in LIC. Secondly, we must remember there are not many options right now. I mean, if you are an IPO investor, I mean, there is no other option except that you park a little bit of money with LIC and hope to make some gains. So I think it is more like that than a speculative frenzy which we saw in many other IPOs and which did not come to any good results. Just looking at the index, it fell by 2% for the month. In fact, 2.5%. If you look at the BSE and the NSE, it's between 2.6
and 2.07% for the month. What's the trend likely to be, apart from stock-specific action, sectors combined, the index itself for the month of April, May, June? So April typically started off very well, and it opened with a lot of gains, and then in the middle of the month we started seeing that there was profit booking, and companies when they came out with results, particularly IT companies, kind of disappointed the market. Although the numbers were very good, but I think the growth numbers were not very impressive, and therefore the markets took the profit. And again, we must remember that all these stocks are trading at very high levels, and investors who had put in money earlier, they found it very prudent to pull some money off the table. So I think a lot of profit booking happened across the sectors in banking, some private sector banking names. Public sector banks have done well, but private sector banks have seen a lot of selling. HDFC Bank, Axis Bank today, even after the numbers were very good. So I think it's more of a profit booking by people who have large positions there. Going forward, I think May, June are also going to be slow months. I don't see very big market activity in the months ahead. Like I said earlier, market will wait to see where it settles down, and I don't see very big money flowing into the markets, at least in the next couple of months. और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एशिया शेयर बाजार पर। कल अमेरिका में शेयरों की तेजी का असर आज एशिया बाजार पर नजर आया। बाजार में उत्साह का माहौल रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 2.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.3% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1% की बढ़त नजर आई। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.1% से 0.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, very briefly, even though the rupee appreciated by 6 paise against the US dollar in the currency trade, what is the situation with the yuan, especially with the COVID lockdown? It's been very range bound. It has not lost value. Why? No, actually, yuan fell very sharply lately. In fact, it has been one of the major concerns in the markets, in global markets, that after 2014-15, this was the first time that yuan really fell, given the fact that yuan was trading at about 6 plus to the dollar, and then suddenly it fell to 6.5. So clearly, the Chinese economy was taking a hit from COVID lockdowns and from slowdown in the economic growth. But I think yuan, given the fact that China has $3.2 trillion in foreign exchange reserves right now, I don't think it's very vulnerable to a fall, but China needs to watch out for it, because no fresh investments are coming into China by foreigners. They've slowed down a lot. On top of it, China's trade is quite disrupted right now. So I think yuan, if it stabilizes at 6.5, 6.6, that should be fairly okay. But right now, in fact, in the last couple of 2-3 weeks, there have been a lot of concerns about the Chinese currency weakening sharply. Well, on Tuesday, we saw the valuation at 0.15 US dollar to a yuan, which is in decimal points, and it's still the same today being Friday. No, that's okay, but so if we take it otherwise, I mean, so yuan, 6.5, 6.6 yuan to the dollar is roughly 1.15 that you're mentioning. And this used to be about 6 to the, and remember, in currency markets, a movement of 6% is huge. It makes a massive difference when you're dealing with a trade of the size of $6 trillion. So it's a very large movement. In fact, last week there were a lot of concerns that 2015 kind of crash can happen in the global markets if yuan depreciates significantly, because that disrupts the entire trade balance. It has stabilized a little bit in the last 2-3 days, but everybody remains concerned that yuan could be a weak point in the global economic equation right now. I hope it doesn't disrupt things further.
Well, let's have a look at what's happening in the U.S. market. The three major U.S. stock indices logged robust gains yesterday. U.S. share indices rose as strong earnings from Meta Platforms lifted battery technology and growth stocks and offset concerns around a contraction in the U.S. economic growth in the first quarter. The Facebook parent rose 12.4% after it reported a stronger than expected profit, and the social networking site eked out user growth. Dow Jones Industrial Average Index climbed 1.9%, the S&P 500 surged 2.5%, and the Nasdaq Composite Index jumped to 3.1%. We had discussed about Meta's performance in terms of net profit and increase in user growth on Money Matters this afternoon. Do tell us about the earnings of Amazon and Apple, which are the major drivers of the U.S. economy as well, both in terms of employment and in terms of profitability and market capitalization. So Arjun, we got good news for Meta, which is basically Facebook company, and therefore markets had risen sharply in USA yesterday. However, after markets closed in USA, then we had results from Apple and Amazon come in. Amazon had a surprise loss for the quarter, which was very disappointing. And on top of it, Amazon said that, look, we don't see the growth at previous levels, and they see a sudden slowdown in their growth numbers. So clearly, that was a disappointment for the market. So when the markets open today, in a few minutes, I'm sure they will take a hit on the Amazon shares. Similarly, Apple came out with results. Apple, although they beat the estimates. Apple came in with numbers which are better than market street estimates. Even then, Apple said that, look, because of cost pressures, because of inflation, our margins are under pressure and we are not able to produce to the required levels. So both Apple and Amazon came out with commentary which was not very encouraging. And therefore, I think today's US market may take a little bit of hit from both these companies' announcements. Of course, the overarching concern in the market right now is the US Fed meeting next week, because that is where the penny will really fall, and whether they take a 75 basis point hike or 50 basis point hike, and how they guide the US economy. We must remember, yesterday US GDP numbers came. Surprisingly, they were in the negative territory. There was a contraction in GDP, which is very rare for US economy. It happened, and there are many reasons. So I think there are a lot of those big macro questions going around right now. Of course, Amazon and Apple also add to that concern right now. Well, what about the corporate results in the U.S.? Amazon is the major shareholder is Jeff Bezos. He's no longer running the company. He's now in charge of Blue Origin. Do you think that kind of diversification has led to a slump in Amazon earnings? On the other hand, Elon Musk is doing very well. He's acquired Twitter now, and both Tesla Motors and his space venture SpaceX is doing very well. How would you compare these two entrepreneurs who are giants in the global markets? So, of course, Arjun, it's a very complex comparison, needs very detailed thing. However, I don't know. I mean, Elon Musk, the day he announced that he is going to acquire Twitter, the company Tesla, his main investment, it lost $126 billion in valuation on a single day. The stock went down by 13%. So how smart a decision it was, I don't know. He bought a company of $44 billion, but he lost $126 billion in valuation for his investors. So all these things are there in the air. Having said that, I think the U.S. economy, the U.S. As a global giant, I think it's going through a transformation, and a lot of these players will define how the U.S. businesses are done in future. I'm also a student of this situation which is developing. Let's see how it works out. It appears that the Russia-Ukraine crisis is actually opening up a lot of the claims of these developed economies. It's also bearing a lot of weaknesses in their armor in terms of energy requirements and how it's linked to industry which generates so much employment there. So short term, I think the US-Ukraine crisis is not just about human crisis, which is war, which is happening there. It exposes a very important weak link in the global economic chain. And this, the kind of, I don't want to use the word blackmail, but the kind of, the way in which they've weaponized energy prices. They're forcing companies to pay in rubles and doing all. I think the world is waking up to a whole new reality that it has to change the way it was working in last 100 years.
We have seen a lot of war. So war is not a surprise for the world. In last 100 years, the world has seen the Second World War and so many wars. I don't think war is something which really throws us off the guard. It is the way the global economic order has been disrupted, particularly using oil and energy as a weapon. I think that is going to change. And next 10 years, we will see a new world order on oil and energy consumption. I think that is the real long-term impact of what is happening in Russia and Ukraine right now. पुनीत, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, कितना समय लगेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था को उभरने में जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, ये युद्ध का जो मेन असर आ रहा है वो इकोनॉमिक साइड पे आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, जैसे हमने बात करी एनर्जी प्राइस को बढ़ा रहा है। मुझे ये लगता है अगर यूरोप की हम बात करें, जहां पर पोलैंड में रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी है और वो बाकी उनको भी थोड़ा थोड़ा धमका रहे हैं कि हम आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ा देंगे या सप्लाई बंद कर देंगे, और 8-9 महीने मुझे लगता है जर्मनी से काफी उनका वो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि यूरोप को भी करीब कम से कम नहीं तो 8-9 महीने या 1 साल लगेगा अपने आप को रीओरिएंट करने में और तैयार करने के लिए कि वो रशियन गैस पे डिपेंडेंस कम करें। मतलब विश्व को मुझे लगता है साल के अंत तक ये सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जी। Well, let's have a look at the oil action right now. Brent crude oil prices today rose around 2% amid supply worries due to the Russia-Ukraine conflict. However, caution about the fall in oil demand in China due to the economic impact of COVID-19 restrictions capped the gains. In intraday trade, Brent crude was trading around $109.50 per barrel, while WTI crude prices were at $106.41 per barrel. Well, just looking at the energy market that you were discussing about earlier, oil prices haven't really receded. We're seeing an offset situation here, but this is about crude oil prices. We're not hearing anything about fracking by the US in terms of being able to further offset prices below. Why isn't that happening? See, first of all, Arjun, the important thing is that OPEC and Russia are collaborating on this. So OPEC promised to increase production, they did not do it. So OPEC and Russia are really together in controlling the oil markets right now. And like we've seen, these guys have weaponized oil in the war. Or trying to get more money for it. Similarly, US has tried to weaponize dollar as a weapon, to increase its power. So clearly, the world economy is in the throes of this kind of tit for tat and situation. So I think it is going to take time. It is not going to be resolved easily. There are a lot of concerns. Yes, consumption is actually low, but even then there are a lot of issues in resolving this. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना 580 रुपए की बढ़त से 51,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 615 रुपए की बढ़त से 64,535 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,918.50 प्रति आउंस के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी बढ़त से $23.50 प्रति आउंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में सोने और चांदी की चाल और बढ़त कैसे रहने वाली है? देखिए, सोने की कीमत जो है डॉलर टर्म्स में, वो डॉलर का इंडेक्स जो है उससे लिंक्ड होती है, क्योंकि हमने देखा था डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल 104 पर पहुंच गया था और गोल्ड $19 से कम आ गया था। अब थोड़ा सा कमी आई है डॉलर में, तो मुझे देखा है गोल्ड में रेट थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आगे अब गोल्ड में स्टेबल रहेगा रेट और थोड़े से ऊपर की तरफ चलेंगे। पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic share indices decline around 0.8%. Sensex closes near 57,100 points. Nifty settles below 17,100. Rupee appreciates by 6 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise to $109.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.